In today's video, we are going to learn about viruses. About a century ago, at the time of Louis Pasteur, this guy, the word virus was generally referred to a poison associated with disease or death. The present notion of virus is entirely different. You can see here in this diagram, this is what a virus look like. But in today's time now, the notion is entirely different. Now, the virus recognized as particle of nucleic acid that do have a protein code, as you can see right here. They replicate they replicate in living cells and cause many diseases such as influenza, hepatitis, smallpox. In this is what the virus's concept is right now. So the branch of biology that deal with the study of viruses is called as virology. जो वायरस है वो एक लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका लेटिन वर्ड विनोम मीनिंग poisonous fluid. It can be defined as non-cellular infectious entities which contain either RNA or DNA, normally encased in a protein coat and reproduce only in living cells. Viruses utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to other cells. So this is what the viruses are. This is how they look like. ये देखें तो ये बैक्टीरियोफेज अ काइंड ऑफ वायरस है और ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है सब में आप अगर देखें यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वेलप है ये शीट है ये प्रोटीन कोट है ये न्यूक्लिक एसिड है राइट ये आरएनए इसमें प्रेजेंट है इस टाइप में डीएनए प्रेजेंट है और ये टेल फाइबर्स हैं बैक्टीरियोफेज में अब एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि वायरोलॉजी किस तरह से स्टार्ट हुई सबसे पहले जो इट वाज अबाउट द टाइम ऑफ 100 BC चाइना में सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स यूजिंग वेरियोलेशन पार्टिकल यूज़ की गई फिर 1400 BC में रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ वायरस इन्फेक्शन का इजिप्ट में और मेम्फिस में मिला देन 1796 में एडवर्ड जेनर ने एक बॉय को काउपॉक्स इन्फेक्टेड मटेरियल के साथ वैक्सीनेट किया 1880 में जर्म थ्योरी आ गई जिसमें पास्चर ने आइडेंटिफाई किया रेबिस को दैट दे आर कॉज्ड बाय एन एजेंट एंड ही टर्म वायरस फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन पॉइजन उसके बाद 1892 में बिगनिंग ऑफ वायरोलॉजी हो गई राइट उसमें बिगनिंग ऑफ वायरोलॉजी होगी जिसमें कि सिरेमिक फिल्टर एक्सट्रैक्ट को डिजीज़ प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया गया जो कि ट्रांसमिट कर रहे थे डिजीज़ दूसरे प्लांट्स में भी देन 1898 में मार्टिनस ने वर्क किया और फ्रेडरिक लॉफर एंड पॉल फ्रॉश दे वर्क ऑन द फुट एंड माउथ डिजीज़ दैट फाउंड इन कैटल फिर 1909 में लैंड स्टाइनर एंड पॉपर ने poliomyelitis, the yellow fever. It was the first ever human disease to be recognized as viral disease. उसके बाद अगर हम देखें तो 1915 टू 17 के ब्रैकेट में बैक्टीरियोफेजेस ईटर ऑफ बैक्टीरिया इनको डिस्कवर किया गया जो कि इन्फेक्ट करते थे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस 1950 से 2003 तक डिस्कवरीज हुई काफ़ी डिफरेंट वायरसेस की टू नेम सम लाइक अबोला वेस्टर्न नाइल HIV सार्स ठीक है तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ वायरोलॉजी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ viruses like this one is a bacteriophage this one is a tobacco mosaic virus
This one is an adenovirus and this is the influenza virus. अगर आप देखें तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए प्रेजेंट है बट आरएनए नहीं है, टोबैको मोज़ेक में आरएनए है बट डीएनए नहीं है, एडिनो वायरस में भी डीएनए है और इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए होता है, राइट? सो कुछ वायरसेस कंटेन डीएनए करते हैं, कुछ आरएनए करते हैं. Then it's your favorite quiz time. So the first MCQ that we got for today is that the branch that deals with the study of viruses is known as virology, bacteriology, or microbiology. As we know, as we have just studied, that the branch that study with the study of viruses, it is known as virology. Here it is the correct answer. The second MCQ is that the word virus is referred to as mushroom, poison, or poles. We know that the word virus referred to as poison. So here poison is the correct answer. So this conclude our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below and I'll get back to you as soon as possible.